Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Biomolecules and Cell Biology, and in this lecture we will discuss about the meiosis. Okay, we have discussed that in the last class. Kana discuss करना that is about the cell division. Okay, cell division अगर मैं दुईटा category रे divide करथुना, one is the mitosis and another one that is your meiosis. देखो cell रो जेतले division होची, cell division. Cell division माने काना? The cell will divide to form the two daughter cell, or in case of your meiosis the cell will divide to form four daughter cell. Okay, so cell division के दुईटा category रे divide करथना. One is the mitosis, out हला meiosis. Another one that is your meiosis. Okay, in mitosis what happen? There will be formation of two cells जेंटा कि हमें complete करी सारलानो. But in case of your meiosis, what will happen? Meiosis case रे there will be formation of four cells. इनु गुटे cell रू केतेटा cell रो formation हवा चारटा cell. इनो गुटे cell रू केतेटा cell formation हवा दुईटा cell in case of your mitosis. Right? तो हमारा mitosis रे जन दुईटा cell formation हवा that are same as their mother cell. तकर mother cell रो copy formation हवा. Okay, but if you see in case of your meiosis, there will be formation of four daughter cell and four daughter cell that are not same as their mother cell, because they have half number of chromosomes as their mother have. Okay, as their mother cell have. तकर मदर सेल पाखे जेतकी क्रोमोसोम अछि तारनु आधा क्रोमोसोम प्रेजेंट थिबा केनो डॉटर सेल रे जदी हमर सेलटा केन डिवीजन करूचे मियोसिस करूचे दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस राइट मियोसिस के सेतिर लेके हमें काना कहसु मियोसिस के अदरवाइज कहा जैसे काम लिखे दिस इज योर रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस दैट इज नोन एज व्हाट reductional division. Why it is called as reductional division? Because the chromosome number that reduce कमी गला ना आधा हे गला माने काना हे गला कमी गला as the chromosome number reduce, that's why the process of cell division that is through the meiosis is also called as what? That is your reductional division. But here mitosis का मैं काना क्वेश्चन पढ़ी थी ना, that is called as your equational division. Why it is called as equational division? Because mitosis रे मदर सेल रे जतकी क्रोमोसोम थिला डॉटर सेल रे भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम थिला सेतिर लगे ताके कहसी काम बलिकरी इक्वेशनल डिवीजन बलिकरी कहजेस राइट माइटोसिस जते बेले हवा गोटे हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस करि परबा और डिप्लॉइड सेल भी माइटोसिस करि परबा ओके गोटे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल दे बोथ कैन अंडरगो माइटोसिस both can undergo माइटोसिस माइटोसिस ता हमर गुटे हैप्लॉइड सेल भी करि परसी डिप्लॉइड सेल भी करि परसी राइट हैप्लॉइड सेल जदी अछि ओके हमर पाखे जदी गुटे हैप्लॉइड सेल अछि हैप्लॉइड सेल रु जोड़े हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन हबा हमर पाखे जदी डिप्लॉइड सेल अछि त गुटे डिप्लॉइड सेल रु दुईटा डिप्लॉइड सेल रे ही फॉर्मेशन हबा बट इन केस ऑफ योर meiosis only the diploid cell undergoes meiosis, never your haploid cell go meiosis. Okay, तो हमर diploid cell खाली काना करबा that will undergo meiosis and meiosis करी करी हमर जन चारटा cell formation हबा चारि cell that are having half number of chromosome or half set of chromosome. Okay, हमर गोटे diploid cell पाके केतेरा set of chromosome छै दुईटा set of chromosome काना से set of chromosome हमें डिस्कस करथिले लास्ट क्लास रे okay and inogen chatta cell of formation aba chari cell that are having half number of chromosome as their mother cell have mother cell पाखे 2n थिला but सबु cell जन chatta cell बनला समानकर पाखे n अछि बुझी परलो so हमर meiosis किए करि परबा only diploid cell can go for okay that is your meiosis anyway if you see the historical point of view historical background यदि हमें डिस्कशन करमा historical background of meiosis
meiosis that was first discovered by one of the biologists jar na hoche van Benden. Okay, so this was first discovered by meiosis was discovered by van Benden. Okay, van Benden for the first time he discovered the meiosis, right? But the term meiosis kiye deythile, meiosis word ta kiye anithile for the first time, but the meiosis term was given by meiosis term was given by meiosis term ta kiye deythila, that was given by Farmer and Murray. Okay, Farmer and Murray, they gave the term meiosis. Okay, anyway, meiosis ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ meiosis के broadly ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ broadly different category ରେ divide କରାଯାଇଛି according to the where this meiosis occur. देखो meiosis किन टाइम रे होଉଛି, ओके सेटा के बेस करी करी meiosis के different category रे हमें divide करी पारबा. meiosis के हमें different category रे divide करी पारबा. ओके, one of that meiosis गोटे meiosis जहा के कुहा जे से काम बोली करी that is called gametic meiosis जेंडा के हमर जनरली देखबार के मिलसी. One, that is your gametic meiosis. Gametic meiosis. Okay, what is gametic meiosis? जे हमर जदी meiosis होचे during the time of gamete formation, जदी meiosis हला during gamete formation, during gamete formation जेतो बेला हमर higher organism देखुछु, in case of your higher organism the gametes that are formed as a result of this meiosis. Okay, so during gamete formation in case of higher organisms, higher organism case re, there will be occurrence of this meiosis to produce the gametes, that is known as your gametic meiosis. Then for example, if you see in case of your human being पाखे हमर केतेटा क्रोमोसोम अच्छे देखो ह्यूमन केस रे हमर गैमेट केनटा स्पर्म एंड ओवम जेतले देखुछु हमें ह्यूमन केस रे काना होचे हमर जन स्पर्म बनबा केनो बनबा स्पर्म मदर सेल रो बनबा ह्यूमन रो जन स्पर्म मदर सेल अच्छे स्पर्म जेनु फॉर्मेशन बा ताके कहउछु स्पर्म मदर सेल सेटा गुटे का सेल है दैट इज अ डिप्लॉइड सेल है and 2n is equal to सतर पाके कितने 46 टा क्रोमोसोम अछि, right? But this sperm mother cell that will undergo the process of meiosis, sperm mother cell काना करबा meiosis करबा and सेनो काना formation हबा sperm रो formation हबा and again sperm रो formation हबा से sperm पाके कितने क्रोमोसोम थिबा 23 chromosomes and that will be your haploid. Only one set of chromosome थिबा हमर जेन 2n is equal to 46 लेखला एक नंबर टा दुईटा क्रोमोसोम दुई नंबर टा दुईटा क्रोमोसोम तीन नंबर टा दुईटा क्रोमोसोम एंता करी 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 टोटल 23 नंबर तक जदी जिमा सबु क्रोमोसोम केते केते टा थिबे दुई दुईटा थिबे केन सेल रे हमर स्पर्म रो मदर सेल रे थिबे. But sperm mother cell जेतेबेले that undergoes the process of meiosis that results in the formation of what? That results in the formation of sperm and sperm have only one set of chromosome. That means एक नंबर क्रोमोसोम गुटे दुई नंबर क्रोमोसोम गुटे तीन नंबर क्रोमोसोम गुटे एंता करी करी टोटल 23 टा क्रोमोसोम सब गुटे गुटे क्रोमोसोम प्रेजेंट थिबा. ओके, ताके कहमा में काम बोली करी that is called as one set of chromosome. This is one set of chromosome. Okay, one set of chromosome जतले देखुछु केन देखबार के मिलु छे that is in case of your gametes and gamete formation करबार लगी जन meiosis हला ताके कहउछु हमें काम बोली करी that is called as gametic meiosis, right? Then if you see another category of the meiosis that is known as your sporing meiosis, another one that is your sporic meiosis. What is sporic meiosis? जदि हमर meiosis होउचे during the time of spore formation, okay, in some cases there is formation of spore,
Okay, if the meiosis occurs during spore formation, if there is occurrence of the meiosis, then that is known as what? Sporic meiosis. Spore kenta. Then for example, in case of your plants, plant case re formation esi microspore, megaspore formation esi soroche. Amor plants ro reproduction तुमे पढ़िथिबो सेकंड ईयर रे थिला, प्लस 2 सेकंड ईयर रे थिला. प्लांट केस रे हमर काना फॉर्मेशन एसी माइक्रोस्पोर रो फॉर्मेशन एसी. माइक्रोस्पोर जेन होचे दैट इज योर हैप्लॉइड. माइक्रोस्पोर प्लांट केस रे जेन माइक्रोस्पोर मदर सेल अच्छे, माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, माइक्रोस्पोर के अदरवाइज काना कहसी पोलन ग्रेन जहा के कहसु हमें. पोलन ग्रेन जहा के कहसु सेटा गुटे हमर क्या सेल है, दैट इज योर हैप्लॉइड सेल. एनी जेन हैप्लॉइड सेल अच्छे, ई हैप्लॉइड सेल केंता करी फॉर्मेशन एसी दैट वी हैव टू नो दिस. जमर माइक्रोस्पोर मदर सेल जेन अच्छे दैट इज योर डिप्लॉइड सेल. बट दिस माइक्रोस्पोर डिप्लॉइड मदर सेल ई काना करबा, इतर काना हबा दैट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ meiosis. This will undergo the process of meiosis and that results in the formation of your microspore. Okay, and microspore amar काना है, that is your haploid cell. तो spore formation रो लागी जदि हमर meiosis होचे ताके कहमा sporic meiosis, right? तो हमर एंता आउट स्पोर फॉर्मेशन से जेंटा कि मेगास्पोर बोली करी कहसे. एनीवे माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर एंड द स्ट्रक्चर हमर टेरिडोफाइट्स मानकर केस रे भी देख पार के मिलसी, जिम्नोस्पर्म केस रे भी देख पार के मिलसी. एंड सब केस रे ओके स्पोर रो फॉर्मेशन रो लागी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ दिस meiotic डिवीजन. ओके, स्पोर रो फॉर्मेशन हमर फॉर्मेशन अबाउट स्टार्ट हिचे केनु, दैट इज फ्रॉम द आर्किगोनियट्स. देन हमर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म तीनटा के कंप्राइजेस करी करी कहा जायसी काना बोली करी आर्किगोनियट्स बोली करी कहसे. समानकर केस रे हमर meiosis ए स्पोर फॉर्मेशन अबाउट स्टार्ट हिजे. सब केस रे स्पोर रे जेतले भी फॉर्मेशन होचे they undergoes the process of your meiosis. Okay, then another one, that is your zygotic meiosis. Zygotic meiosis. What is zygotic meiosis? देखो, generally we know that after formation of zygote they undergoes the process of mitosis. Zygote formation is साला परे generally हमर काना ऐसे mitosis है. Suppose human case रे हमर ओभम आसला एंड स्पर्म आसला. ओभम पाके 23 टा क्रोमोसोम, स्पर्म पाके 23 टा क्रोमोसोम, दुई जनकर फ्यूजन हला, काना बनला 23 आसला, काना हला जाइगोट दैट इज हैविंग द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ई जाइगोट रो धीरे धीरे डिवीजन हवा एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. ओके, तो इन हमर जेन न्यू इंडिविजुअल बनला, ई सेल मन को बनला एंड ई सब सेल मन को जी देखमा देयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सब सेल रे काना प्रेजेंट अछि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट अछि. देखो हमर बॉडी रो एवरी सेल केनो बनला, इटा गोटे जदी इंडिविजुअल हला, नवा इंडिविजुअल रो सब सेल देखला देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ई 40 ई जेन सेल्स माने असला, ई सेल माने केनो हला, दैट इज कम फ्रॉम दिस. इटा केनो बनला, दैट कम फ्रॉम दिस जाइगोट. जाइगोट रो रिपीटेड डिवीजन हला एंड सनो बहुत सारा सेल्स बनला जाके कहसु हमें एम्ब्रियो बोली करी कहसु. एंड दिस एम्ब्रियो डिवाइड्स or repeatedly that undergoes divide and that organized to form a new individual, right? As the new individual is formed, that is having the 46 number of chromosome. Here this embryo is also having the 46 number of chromosome, this zygote is also having the 46 number of chromosome. That means zygote ro ken division है, zygote ro क्या division है इस जगह रे. जाइगोट पाखे भी थिला 46 एंड इन जे नवा सेल्स बनला सन भी अच्छा हमर काना देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, सो दैट हियर केन डिवीजन है, देयर इज अकरेंस ऑफ योर माइटोसिस. इन हमर केन डिवीजन है, माइटोसिस है. ओके, बट जनरली माइटोसिस इज दिस जाइगोट फॉर्मेशन ला परे इन हायर ऑर्गेनिज्म के. बट हमें जे देखमा इन केस ऑफ योर सम algae जदि देखमा,
algae manकर केस रे जाइगोट फॉर्मेशन आई साला परे they will not undergoes the process of the mitosis, they will go for the meiosis, right? So zygote undergoes meiosis, zygote divides by meiosis, जाइगोट जदि मियोसिस द्वारा डिवीजन कला ताके को हमा में काम बोली करी दैट इज कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस फॉर एग्जांपल दैट इज सीन इन केस ऑफ योर algae केस रे देखबार के मिलसी एज वेल एज इन केस ऑफ योर ब्रायोफाइट्स केस रे भी देखबार के मिलसी ओके algae केस रे काना है देखो algae रो टोटल बॉडीटा हैप्लॉइड बॉडी है algae गोटे कैंसी भी algae उठे नहीं तार सेल नियो से सेल की जदि स्टडी करमा देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ओके गोटे algae काना कला गैमेट फॉर्मेशन कला ओके तो सेतन जेते बेले गैमेट फॉर्मेशन हबा से टाइम रे तार माइटोसिस इज नॉट मियोसिस राइट तो हमर सेनो जेन algae गैमेट फॉर्मेशन कला गैमेट रु से गैमेट ता हैप्लॉइड है गैमेट दुईटा गोटे मेल गैमेट गोटे फीमेल गैमेट फ्यूज हेले दैट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बट जाइगोट काना हला डिप्लॉइड हला जाइगोट ता काना हला डिप्लॉइड हला बट दैट जाइगोट विल अंडरगोस द प्रोसेस ऑफ meiosis so that the new cells which will be formed that will be your haploid cell or there will be presence of your half set of chromosome that means amar organism tela haploid zygote hala diploid but se zygote ro फेर नुआ organism जन बनबा that will be again haploid okay so that lower organism case re only zygote undergoes the meiosis but in case of your higher organism the zygote undergoes your mitosis process जंदे कि in case of your plants higher plants okay amar higher plant case re ji देखमा there will be occurrence of your mitosis after the formation of zygotes but in case of a lower group of plants there will be occurrence of your meiosis okay so these are the three broad category of the meiosis next हमको डिस्कशन करबार अछि meiosis रो डिफरेंट फेजेस ओके meiosis के हमें डिफरेंट फेजेस रे डिवाइड करू meiosis हमें जेते बेले देखु जो देखो meiosis के ब्रॉडली दुईटा फेजेस रे डिवाइड करा जैसे गोटे हला meiosis 1 and another one that is your meiosis 2 गोटे हला meiosis 1 and another one that is your meiosis 2 ओके देखो meiosis 1 के कहा जैसे this one that is called as reductional phase meiosis 1 के कहा जैसे reductional phase कहां से reductional phase कहा जैसे we will discuss that but meiosis 2 that is known as your equational phase meiosis 2 के कहा जैसे equational phase but meiosis 1 is known as reductional phase माने जेते बेले गुटे हमर सेल अछि डिप्लॉइड सेल तार जेते बेले से meiosis 1 के एंटर करबा तेनु ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हे जिबा तेनु ही क्रोमोसोम नंबर काना हे जिबा हाफ हे जिबा ओके एनीवे केंदा करी असु ओवरऑल पहला मैं गुटे आईडिया दे देमी तापरे मैं डिस्कस करम मोर डिटेल्स अबाउट दिस meiosis 1 एंड meiosis 2 ओके देखो meiosis 1 के हमें फिर काना करम दुईटा फेजेस रे डिवाइड कर दमा पहला ओवरऑल आउटलाइन देखि दो meiosis 1 के हमें डिवाइड करम दुईटा फेजेस रे वन ऑफ दैट फेज दैट इज कॉल्ड एज योर कैरियोकाइनेसिस 1 ओके K1 माने कैरियोकाइनेसिस 1 एंड C1 माने साइटोकाइनेसिस 1 पहला न्यूक्लियस रे डिवीजन होबा तापरे साइटोप्लाज्म रे डिवीजन होबा ओके देन meiosis 2 के डिवाइड करमा में दुईटा पेज रे जने के हमें कहमा कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2 माने दुई नंबर थरो लागि न्यूक्लियस रो डिवीजन हवा एंड दुई नंबर थरो लागि साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हवा दैट्स व्हाई कैरियोकाइनेसिस 1 को कैरियोकाइनेसिस 2 कहला एंड साइटोकाइनेसिस 2 कहला एनी दुई जनकर भितरे between after completion of cytokinesis 1 cytoplasm थरे डिवीजन हि साला परे दुई नंबर थर जेते बेले न्यूक्लियस डिवीजन हवा से भितरे जेन पीरियड रहला इता के कहसे इंटरकाइनेसिस दैट इज नोन एज व्हाट इंटरकाइनेसिस माने in between the meiosis 1 and meiosis 2 the cell has to prepare itself for the next meiosis okay but this interkinesis that is not same as that of your interphase संगे same नुहे से इंटरफेज रे हमर डीएनए सिंथेसिस होसी बट हमर इंटरकाइनेसिस रे डीएनए रो सिंथेसिस नाइ होय डोंट कंफ्यूज दिस और डोंट मिक्स अप दिस वर्ड इंटरकाइनेसिस एंड योर इंटरफेज अलगा कांसेप्ट है इंटरकाइनेसिस अलगा कांसेप्ट है इंटरकाइनेसिस रे सेल रो प्रिपरेशन हबा ओके वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम रो लगी सेल रो प्रिपरेशन हबा बट किछि केस रे इन केस ऑफ योर फीमेल इंडिविजुअल जे देखमा
हमर फीमेल इंडिविजुअल केस रे बहुत टाइम तक भी ई स्टेज रे रही जाती से सेल माने एनीवे इंटरकाइनेसिस रे काना हेसी हमर सब सेल ऑर्गेनेल्स मान को इंक्रीज करबा अमाउंट बट डीएनए अमाउंट टा कांस्टेंट रहसी डीएनए अमाउंट टा इंक्रीज नहीं करे okay so that interkinesis and interphase they both of them are different on the basis of the S phase because interkinesis re S phase in ase okay anyway karyokinesis 1 and cytokinesis 1 karyokinesis 2 and cytokinesis 2 total हमको डिस्कशन करबार छै one by one ओके पहला ओवरऑल काना हेसी हमर सेल रे गोटे डिप्लॉयड सेल रे हमें जानि पको देख सपोज हमें गोटे सेल ने दिस इज सपोज वन सेल ला एनी सेल पाखे धरि नियो देयर इज प्रेजेंस ऑफ फोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल केतेटा क्रोमोसोम अछि चारटा क्रोमोसोम धरि नियो अछि ओके सो 1 1 2 2 2n इज इक्वल टू केते अछि 4 टोटल क्रोमोसोम केतेटा अछि चारटा अछि ओके आई थिंक दिस नॉट विजिबल टू यू just wait I think now it is visible to you okay देखो जेतेबेला मोर you know 2n is equal to 4 हला टोटल क्रोमोसोम केतेटा अछि चार राइट ई काना करबा पहला ई सेल काना करबा हमर इनो क्रोमोसोम माने केन कंडीशन रे अछन क्रोमोसोम माने मोनाड कंडीशन रे अछन राइट सो दैट पहला हमर गोटे कैंसी सेल टे डिवीजन करबार आगरु केन फेज के एंटर करसी कैंसी भी डिवीजन करू माइटोसिस करू या फिर मियोसिस करू सेल पहला एंटर करबा केन फेज के इंटरफेज के एंटर करबा the cell will enter inside the interface and interface रे जहा जहा से we have discussed about this okay anyway हमर इनो काना हबा देखो हमें बेसिकली डिस्कशन करमा ई जगह रे क्रोमोसोम के नै करी क्रोमोसोम इनो मोनाड कंडीशन रे थिला माने गोटे क्रोमोसोम दैट इज हैविंग वन क्रोमाटिड बट आफ्टर इंटरफेज क्रोमोसोम हमर केन कंडीशन के आसी जैसी टायर्ड कंडीशन के आसी जैसी okay so that now they are in diad condition okay so 1 1 2 2 total हमर पाखे चारटा क्रोमोसोम अछि पहला तेरा क्रोमोसोम this one that is your mother cell इडा के क्वेश्चन में काम लिखरी this one that is your mother cell है okay anyway जेन सेल रो मियोसिस अछि ताके कहैसी मियोसाइट ताके कहैसी मियोसाइट मन रखितो what do you mean by myocyte the cell which has to undergo the process of meiosis that is known as your myocyte okay so here this one that is now ready for the meiosis interphase pass kala interphase pass kari sala par now it is ready to go for the cell division okay but here we are discussing about the meiotic cell division so first of all what will happen इतर हमर काना बा देखो इनुजन दुइटा सेल रो फॉर्मेशन हबा फर्स्ट गुटे डिवीजन करबा जहा के कहउछो मियोसिस 1 हमें कहला जे मियोसिस दुइटा पेज रे कंप्लीट हेसी गोटाला मियोसिस 1 आ गोटाला मियोसिस 1 जतो बेले हबा इनुजन पहला दुइटा सेल रो फॉर्मेशन हबा हियर both the cells are having half set of chromosome देखो इनो इजन दुइटा एक नंबर क्रोमोसोम अछि कि दुही एक नंबर क्रोमोसोम भितर गुटे एक नंबर क्रोमोसोम आसबा इनके one fast chromosome will come here and another fast chromosome will come here that means in our इजन क्रोमोसोम अछन इ दुही क्रोमोसोम रो सेपरेशन हबा okay out of that one out of that pair of one chromosome first chromosome हमर एक नंबर क्रोमोसोम दुईटा थिला दुई नंबर क्रोमोसोम दुईटा थिला ओके हमर एक नंबर क्रोमोसोम आउ जन एक नंबर क्रोमोसोम दुईटा अछि देखो इटा मन को काना कहवा जैसे एक नंबर के काना कहवा जैसे दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इ दुईटा के कहवा जैसे काम लिखरी होमोलोगस क्रोमोसोम बोली करी कहवा जैसे तंत हमर दुई नंबर क्रोमोसोम और दुई नंबर क्रोमोसोम के काना कहवा जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहवा जैसे तो हमर होमोलोगस क्रोमोसोम रो सेपरेशन हबो one of that homologous chromosome will comes to this cell and another homologous chromosome will comes to this right then here out of that second chromosome or here we have make this in yellow color
yellow color chromosome, one of that yellow color chromosome will come here and another one will come here, right? So in our ek number ta gute hoche, dui number ta gute hoche. Here also ek number ta gute hoche, dui number ta gute hoche. Ek number ta gute, dui number ta gute. Here ek number ta gute, dui number ta gute, right? देखो आमे जेतेला मदर सेल देखुतिला एक नंबर टा केतेला थिला दुईटा दुई नंबर केतेला थिला दुईटा ओके इटा गुटे सेट थिला इटा गुटे सेट थिला सो दैट आमे एताके कहूतला 2n बोली करी को राइट बट हियर एक नंबर टा गुटे न अछि और दुई नंबर टा गुटे न अछि सो दैट दिस इज 1n दिस इज 1n meiosis 1 रे कहार सेपरेशन हला meiosis 1 रे देयर विल बी सेपरेशन ऑफ द homologous chromosome separation of homologous chromosome मन रखी तो इनो क्वेश्चन ऐसे homologous chromosome रो separation हला and here after this meiosis 1 each cell are having half set of chromosome इनो आधा सेट अच्छे n अच्छे इनो आधा सेट अच्छे n अच्छे जेहेतु meiosis 1 रे क्रोमोसोम नंबर आधा ही गला इस सेल रे हमर टोटल क्रोमोसोम केतेरा थिला इस सेल रे टोटल क्रोमोसोम 1 2 3 4 चारटा क्रोमोसोम थिला but now this cell is having two chromosome and this cell is having two chromosome दुई दुईटा क्रोमोसोम अछि मनकर पाखे तो तेरे क्रोमोसोम नंबर आधा ही गला that's why meiosis 1 के कहै छै काम बोली that is called as reductional division that's why this is called as what reductional division okay or reductional phase बोली कहै छै meiosis 1 के आगरु कहै next what will happen now इजन सेल अच्छे ई सेल रो दुईटा सेल रो फॉर्मेशन हबा एंड ई सेल रो दुईटा सेल रो फॉर्मेशन ओके इमेजिन करो जस्ट लाइक योर माइटोसिस रो यदि हमर ई सेल रो माइटोसिस हता बोले हमर काना हेता दुईटा सेल बनता ओके तो जुड़े जन सेल बनला दिस इज वन सेल दिस इज अनदर सेल इतन भी दुईटा सेल बनला इतन भी दुईटा सेल बनला एंड व्हाट विल हैपन नाउ हमर जन क्रोमाटिड दुईटा अछन ओके इजन दुईटा क्रोमाटिड अछन इटा गुटे क्रोमाटिड ओके एंड दिस वन इज अनदर क्रोमाटिड दिस वन इज अनदर क्रोमाटिड इजन क्रोमाटिड मानकर अच्छे ई क्रोमाटिड मानकर काना हवा इन सेपरेशन हवा लेट मी ड्रॉ दिस हियर लेट मी टेक अनदर कलर ओके देखो इजन क्रोमाटिड अछन ई क्रोमाटिड मानकर सेपरेशन गुटे क्रोमाटिड गुटे साइड के जेबा आ गुटे क्रोमाटिड आ गुटे साइड के ओके तो ई दुइयंकर भितरु ई क्रोमाटिड इनके असला एंड ई क्रोमाटिड इनके असला सो दैट इट विल जस्ट लुक लाइक दिस ओके एंड ई जन दुईटा क्रोमाटिड अछन ई क्रोमाटिड टा इनके असला एंड आर क्रोमाटिड टा इनके असला सो दैट इट विल जस्ट लुक लाइक दिस ओके देन हियर सेम थिंग्स हियर आल्सो occur इनो हमर येलो कलर दुईटा क्रोमाटिड जन अछि गुटे क्रोमाटिड इनके असला देन व्हाइट कलर दुईटा क्रोमाटिड जन अछि दे विल कम हियर इधर मदर सेल देखो मदर सेल पाखे केतेटा क्रोमाटिड थिला चारटा क्रोमाटिड मदर सेल पाखे केतेटा क्रोमाटिड थिला चारटा क्रोमाटिड बट इनो डॉटर सेल देखो केतेटा क्रोमाटिड अछि गुटे 1 नंबर अछि गुटे 2 नंबर अछि गुटे 1 नंबर अछि गुटे 2 नंबर अछि गुटे 1 नंबर गुटे 2 नंबर गुटे 1 नंबर आ गुटे 2 नंबर that means सब केन कंडीशन रहसन they are in haploid condition सब केन कंडीशन रहसन haploid condition okay half set of chromosome मन करनो अछि इने जन चारटा सेल फॉर्मेशन हला these are the result of your meiosis okay this is the result of your meiosis these are called as daughter cell okay तो इटा नंबर जस्ट आउटलाइन ऑफ योर meiosis रे एक्चुअली हेसी काना जस्ट गुटे आउटलाइन में बता देली राइट बट इता क्या में ई एनीवे इनो हमर जन देखु छु दिस वन दैट इज योर meiosis 2 कहू छु इता के meiosis 2 बोली करी कहू छु एने meiosis 2 के देखो meiosis 2 रे हमर इनो केतेटा क्रोमोसोम थिला दुईटा क्रोमोसोम थिला इनो भी केतेटा क्रोमोसोम थिला दुईटा क्रोमोसोम थिला एंड इनो जन दुईटा सेल रो बनला सेनो भी केतेटा क्रोमोसोम अछि दुईटा क्रोमोसोम अछि इनो जन दुईटा सेल बनला केतेटा क्रोमोसोम अछि दुईटा क्रोमोसोम अछि जेहेतु 2 रु 2 बनला सेतिले गीत के क्वेश्चन काम बोली करी meiosis 2 के दिस इज कॉल्ड एज व्हाट
this is your equational division or equational phase. This is called as your equational phase, or this is same as that of your mitosis. Question I see, mitotic phase sange amar ken phase of the meiosis that is same? Which phase of the meiosis is same as that of your mitosis? Kenda, that is your equational phase, or we may say that this is the meiosis 2. But meiosis 1, that is your reductional phase. meiosis 1 रे ही क्रोमोसोम नंबर रो कान है जुचे हाफ है ना. एटा कला हमर ओवरऑल आउटलाइन ऑफ दिस meiosis. नेक्स्ट हमको डिस्कशन करबार से डिटेल्स अबाउट दिस meiosis. ओके, meiosis रो हमें जतो बेले डिटेल्स डिस्कशन करमा meiosis रे व्हाट विल हैपन. फर्स्ट हम डिस्कशन करमा meiosis 1 बाबत रे, तापर हमें meiosis 2 निके जेबा. ओके, बट इटा जानि तो जो meiosis 1 एंड meiosis 2 के मिसई करी ही meiosis है, दुईटा के मिसई करी ही हमर meiosis है. So that first हमें आज डिस्कशन करू meiosis 1. meiosis 1 meiosis 1 रे हेति कान meiosis 1 के हमें काना करतला फिर डिवीजन करतला गोटे karyokinesis 1 karyokinesis 1, okay, and another one that is your cytokinesis 1. cytokinesis 1, okay. karyokinesis 1 रे हमर काना हबा nucleus रो division हबा for the first time. Okay, so anyway it will just look like this, you know, हमर nucleus रो division हबा. Okay, दुईटा cell रो formation हबा. And cytokinesis 1 रे there will be occurrence of the cytoplasmic division, so that here both the nucleus will separate by the formation of a wall between them. Cytoplasm will divide here. Anyway, karyokinesis 1 के हमें divide करमा different phases. जेंदा कि हमें mitosis रे देखुतला mitosis के divide करतला prophase, okay, then metaphase, anaphase, and the fourth one that is your telophase. Okay, but इता के जेहेतु हमें meiosis 1 अंडर रहउचे prophase 1 लेकुचो, metaphase 1 लेकुचो, anaphase 1 लेकुचो, telophase 1 लेकुचो. Okay, meiosis 1 अंडर रहउचे बोली के लेकुचो. बट हमर सबुतरु लॉन्गेस्ट फेज केनटा के कंसीडर करसु प्रोफेज के, सबुतरु शॉर्टेस्ट फेज केनटा के कंसीडर करसु anaphase के. So as compared to your mitotic prophase, mitosis रो prophase के यदि हमें कंपैरिजन करमा कहार संगे meiosis रो prophase 1 संगे, this is very complex one. mitosis रो meiosis और mitosis रो prophase and meiosis रो prophase 1 के यदि कंपैरिजन करमा, that is very complex because this is having several steps, several soft stages. कितना soft stages माने किसी prophase 1 रे जेंदे कि हला leptotin, then leptotin पर आसवा another phase that is your zygotin, then pachitin, then diplotin, and the last one diakinase. Okay, देखो leptotin, zygotin, pachitin, diplotin and diakinesis बहुत इजीली हमें बुझी जिमा सब स्टेजेस किछि टेंशन नबर नानो काना है सिंपली गोटे ही जिनिस रो काम चलित से सतर बाबद हमें डिस्कशन करमा इजा करे. Okay, then metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 discussion karma. Okay, these are generally same as that of your mitotic metaphase रे जनता इसी anaphase रो भी anaphase of the meiosis भी पाकापाकी समान रहते, but काना डिफरेंस इसी हमें तरह डिस्कशन करना. Okay, हमें prophase 1 के डिस्कशन करना पहला that is about the leptotin. देखो first let's discuss about this prophase 1. ओके, प्रोफेज 1 रे जमे जदी सेल देखमा
प्रोफेज 1 रे फास्ट देखो लेप्टोटीन ओके लेप्टोटीन रे काना हम देखो सपोज दिस इज सेल हला दिस इज योर मियोटिक मदर सेल जेन सेल रो मियोसिस हबार के जाउ छी लेप्टोटीन रे हमर काना हम देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमर जेन न्यूक्लियस अच्छे न्यूक्लियस रे भितर हमर काना छै क्रोमोसोम ओके हमर जेन क्रोमोसोम माने अछन क्रोमोसोम दे स्टार्ट कंडेंसेशन क्रोमोसोम रो काना हवा स्टार्ट हवा कंडेंसेशन कॉइलिंग हवाटा स्टार्ट ओके जेहेतु क्रोमोसोम कॉइलिंग करबाटा स्टार्ट करबा अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन so that हमें यदि क्रोमोसोम के जे देखमा क्रोमोसोम that will just look like beaded manner in a beaded manner माने appear करबे ओके दाना 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 हला भलिया दिसबा बिकॉज़ न हिस्टोन प्रोटीन रे अराउंड रे डीएनए रो कॉइलिंग होছে राइट तो लेप्टोटीन रे हमर काना हवा हियर the chromatin start condensation chromatin start condensation chromatin ର कंडेंसेशन स्टार्ट हला जेतु क्रोमाटिन ର कंडेंसेशन स्टार्ट हला तो डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन ର काना हवा जगह कॉइलिंग होछ and that gives a beaded appearance that gives a beaded appearance दाना दाना बोलिया दिसबा ओके ताके कहउछ beaded appearance okay that give a beaded appearance to the chromatins right this is your लेप्टोटीन रे जस्ट हमर काना स्टार्ट हे छे जस्ट हमर स्टार्ट हे छे कंडेंसेशन हबाटा क्रोमोसोम बनबाटा स्टार्ट हो छे ओके न्यूक्लियस रा मेम्ब्रेन जेंता थिला संता अछि न्यूक्लियोलस स्टिल प्रेजेंट अछि इनो जानि था ओके मैं कहि दउ छे कहते जाउ तुम केनो जाय करे न्यूक्लियस रा मेम्ब्रेन डिजेनरेट करबा में डिस्कशन करबा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टिल प्रेजेंट अछि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus that are still present still they are present इमाने present अछन ताली ओके किछि मन को प्रॉब्लम नाही किछि मन को चेंजेस नाही ओके सो नेक्स्ट नंबर काना हबा देखो नेक्स्ट नंबर 2 नंबर स्टेज असला दैट इज योर जाइगोटिन 3 नंबर स्टेज असला हमर जाइगोटिन जाइगोटिन रे काना हबा जाइगो माने जनरली पेयरिंग जाइगो रो वर्ड जदी जिमा दैट इज जनरली पेयरिंग जाइगोटिन रे हमर काना स्थिति देखो जाइगोटिन रे होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे come close towards each other homologous chromosome comes towards each other निजर निजर अड़के होमोलोगस क्रोमोसोम माने मूवमेंट करबाटा स्टार्ट करबे सपोज धरनिया दिस इज वन क्रोमोसोम हला दिस इज एक नंबर क्रोमोसोम एंड दिस इज द अनदर फर्स्ट क्रोमोसोम ई न अछि न्यूक्लियस र भीतर एटा चली छै राइट ई इतर अड़के मूवमेंट करबा ई इतर अड़के मूवमेंट करबा ओके एक नंबर टक एक नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम का हम जस्ट लाइक दैट हमर पाखे आउटे केन क्रोमोसोम अछि येलो कलर क्रोमोसोम सेकंड क्रोमोसोम okay so here this one is here and this second chromosome is here so this will move towards this and this will move towards this the second will move towards this okay that is the process that is taking place in this zygote phase का हला जे जाउचन हमें नेक्स्ट स्टेज रे जानबा नेक्स्ट स्टेप रे जानबा बट ताके कहा जैसे क्रॉसिंग ओवर हमें समझते अगरु ई वर्ड संगे एक्वेंटेड है थीमा आई थी इनो काना हला देखो homologous chromosome they comes or they move towards each other and that process is called as what that is called as your synaptic movement okay or this is called as your synapsis bolikri कहउछो okay synaptic movement bolikri कहा जाय synaptic movement
What is synaptic movement? The homologous chromosome, they move towards each other, and that movements of one homologous chromosome to the other homologous chromosome, that is known as a synaptic movement. Okay, that means it is the attraction between the first and first chromosome, attraction between the second and second chromosome, right? So synaptic movement ro lagi amar kan haba? Now there will be formation of a pairing. There will be occurrence of pairing between the homologous chromosome. Pairing between homologous chromosome. Okay, HC mana homologous chromosome. Homologous chromosome bhitre amar kan haba na pairing haba. Okay, how it will look now? Inside the nucleus, it is amar cell hala. सेल रो भितरे जे न्यूक्लियस अच्छे न्यूक्लियस रो भितरे हमर काना हला एक नंबर क्रोमोसोम टा एक नंबर क्रोमोसोम संग पेयरिंग करि गला दिस इज फर्स्ट क्रोमोसोम एंड दिस इज अनदर फर्स्ट क्रोमोसोम ओके एक नंबर टा एक नंबर संग पेयर करि गला जस्ट लाइक दैट दुई नंबर टा दुई नंबर संग पेयर करि गला ओके एंदा करी गोटे ऊपर आ गोटे लागि करी अछि ओके एटा एक नंबर टा एटा दुई नंबर टा लागि करी अछन एंता सेई जन पेयरिंग बनला ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವೈಸ್ತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ that is called as synaptonemal complex. This is called as synaptonemal complex. Okay, the pairing of the homologous chromosome, that paired structure, that is called as synaptonemal complex. And synaptonemal complex रे हमर केतेटा क्रोमोसोम अछि दुईटा क्रोमोसोम गुटे synaptonemal complex रे दुईटा क्रोमोसोम अछि बट क्रोमाटिड्स हमर इनो केतेटा अछि you know chromatid hoche amar kana there is presence of four chromatids total से एक नंबर क्रोमोसोम गुटे एक नंबर क्रोमोसोम रो दुईटा क्रोमाटिड आरो एक नंबर क्रोमोसोम रो दुईटा क्रोमाटिड तो टोटल केतेटा क्रोमाटिड्स चारटा क्रोमाटिड्स अछि ओके एनी जन चारटा क्रोमाटिड अछि जेहेतु तो सिनाप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स के अदरवाइज को जैसे काम लेकरी दिस इज कॉल्ड एज योर टेट्राड इता के कोइसे काम लेकरी टेट्राड टेट्रा माने 4 ओके एंड इजन दुईटा क्रोमोसोम दुईटा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हेकरी अछन इमान को कहसे बाइवेलेंट इमान को कह जैसे बाइवेलेंट तो बाइवेलेंट रे दुईटा काना अछन होमोलोगस क्रोमोसोम एक नंबर संगे एक नंबर रो जदी पेयरिंग हला ताके कमा गोटे बाइवेलेंट दुई नंबर संगे दुई नंबर रो पेयरिंग हला ताके कमा बाइवेलेंट बट एक नंबर और दुई नंबर के गोटे जदी मिसामा गोटे गोटे बाइवेलेंट बोलमा दैट इज नॉट द बाइवेलेंट दे आर डिफरेंट टू क्रोमोसोम्स ओके एनीवे इन हमर काना देखो जस्ट लुक एट दिस काना ही एक्चुअली जगह रे क्लियरली हमें जदी देखबार के चाहमा जैसे इज वन क्रोमोसोम ओके टिके मी 3D व्यू दबार के ट्राई करूछा आई थिंक यू मे अंडरस्टैंड दिस क्लियर ओके इटा मोर फर्स्ट क्रोमोसोम हला गोटे इटा में बनाली ओके इतर संगे पेयरिंग हला हमर आरो फर्स्ट क्रोमोसोम ओके गोटे तले अछि आ गोटे ऊपरे अछि इमेजिन कर इटा के हमें गोटे क्रोमोसोम नो ओके इटा के हमें कर दो टोटल सॉलिड कलर कर दो गोटे के आ गोटे के ट्रांसपेरेंट रखे दो ये बुझी पारो
ओके देखो गोटे ऊपर अच्छे आ गोटे तले अच्छे इटा भी एक नंबर क्रोमोसोम है इटा भी एक नंबर ओके इजन पेयर हला दिस पेयर दैट इज कॉल्ड योर सिनाप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स और इता के कहउछो बाइवेलेंट बोली okay so next what will happen why this process is going on inside this nucleus during this time ये टाइम में न्यूक्लियस भितर ये कामटा काजे चले जे बिकॉज नेक्स्ट इट हैज टू परफॉर्म ए प्रोसेस दैट इज नोन एज योर क्रॉसिंग ओवर बिकॉज इनु नेक्स्ट हमर गोटे प्रोसेस हबा जहा के कोइसे काम बोली करी क्रॉसिंग ओवर बोली करी कोआ जस ओके एंड इन क्रॉसिंग ओवर व्हाट हैपन एक्चुअली जानि दिथो पहला मैं कहि दोछ तापर हमें डिस्कशन करमा क्रॉसिंग ओवर रे काना आस्ती ई गोटे सेगमेंट ओके गोटे सेगमेंट टा सेपरेट हे जिबा इतरनो एंड ई सेगमेंट टा इतरनो सेपरेट हे जिबा ई इतरने के पलावा ई इतरने के पला ओके इधर के कोहे से काम लिखे दिस इज कॉल्ड एज योर क्रॉसिंग ओवर ओके ई सेगमेंट टा सेपरेट हे जिबा एंड इतरने के पले आसबा ई सेगमेंट टा सेपरेट हे जिबा और इतरने के पले दैट इज नोन एज योर क्रॉसिंग ओवर ओके सो एनीवे क्रॉसिंग ओवर हबार लगी स्टार्टिंग टा केनु नेला दैट इज इन द जाइगोटिन फेज जदी माना पक्के पक्के नहीं गले पहले ई सतर सेगमेंट सदके दे नहीं पारे सतर सेगमेंट सदके दे नहीं पारे राइट सो दैट इन जाइगोटिन फेज द क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट्स बलिकरी कोहासेस इन जाइगोटिन फेज क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट्स क्रॉसिंग ओवर रो लगी जन प्रोसेस दरकार जेंडा के कहूछ हमें सिनाप्टोनेमल और सिनाप्टिक मूवमेंट जहा के कहूछ ड्यू टू द सिनाप्टिक मूवमेंट व्हाट हैपन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स and that synaptonemal complex is having how many chromosome 2 chromosome and that 2 chromosomes are collectively called as bivalent and that bivalent having 4 chromatids that's why that means that may also called as what tetrad right चलो नेक्स्ट काना होचे 3 नंबर स्टेप्स और 3 नंबर सब फेजेस ऑफ द मियोसिस कैरियोकाइनेसिस 1 रो और प्रोफेज 1 रो 3 नंबर सब स्टेज हला दैट इज योर पाचिटिन ओके पाचिटिन रो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स काना जे पाचिटिन रे हमर काना हबा देयर विल बी ऑकरेंस ऑफ योर क्रॉसिंग ओवर ओके इनु मन रखे तो क्वेश्चन ऐसी केन फेज रे क्रॉसिंग ओवर हैसी it is the time or it is the phase where crossing over occur ओके जिन फेज रे क्रॉसिंग ओवर ऐसे ताके कहूछ हमें पाचिटिन बोली करी कहूछ क्रॉसिंग ओवर माने काना फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्रॉसिंग ओवर रो पहला डेफिनेशन दे दोछ देन वी विल डिस्कस अबाउट विद द डायग्राम क्रॉसिंग ओवर माने काना द प्रोसेस ऑफ exchange of segments the process of exchange of segment between the non-sister chromatids of homologous chromosome is known as crossing over short note rasba you can write this okay kana कहला what do you mean by crossing over the process of exchange of segment between the non-sister chromatid of the homologous chromosome right तो homologous chromosome तो एक नंबर टा कि एक नंबर homologous chromosome बोली करी कहला देखो एटा माने कर chromosome hela okay anyway we have taken this in white color chromosome and yellow color chromosome nahi so that it will be easier to understand you je ek number chromosome jodi nela this one okay and ara chromosome के हमें काना कर दमा बोल्ड कर दमा और सॉलिड कलर कर दो
এটা भी आरटा एक नंबर ही क्रोमोसोम है ओके समान क्रोमोसोम है गोटे दुईटा के आम होमोलोगस बोलिक कहूँ ना ओके इमाने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करिक अछन बट काना हेसी जानबर लगे टिके दूरे रखी दैछ देखो काना हेसी मी बुझौछ भलसे सुन इनो हमर काना हबा हमर এটা गोटे क्रोमाटिड this is another chromatid this is another chromatid and this is another chromatid right चारटा क्रोमाटिड थिला इते के नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 एक नंबर और दुई नंबर इ दुई ही क्रोमाटिड के कहमा में काम बोली करी सिस्टर क्रोमाटिड इ दुई क्रोमाटिड के काना कहमा सिस्टर क्रोमाटिड तीन नंबर और चार नंबर क्रोमाटिड के कहमा में काम बोली करी सिस्टर क्रोमाटिड बट हमें जदि इ गुटे क्रोमाटिड के नेला इ क्रोमाटिड के नेला ओके एंड इ क्रोमाटिड संगे कंपैरिजन करबा माने दुई नंबर और तीन नंबर इ दुई क्रोमाटिड के कहमा में काम बोली करी दैट इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमाटिड नॉन सिस्टर क्रोमाटिड लाइक एक नंबर और तीन नंबर इमन को कहमा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड एक नंबर के तीन नंबर के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड दुई नंबर चार नंबर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड बुझी पाला काहे के कहूछु सिस्टर क्रोमाटिड काहे के कहूछु नॉन सिस्टर क्रोमाटिड एक नंबर और दुई नंबर सिस्टर क्रोमाटिड तीन नंबर और चार नंबर सिस्टर क्रोमाटिड बट एक नंबर और तीन नंबर नला नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ओके एक नंबर और चार नंबर नला नॉन सिस्टर क्रोमाटिड देन दुई नंबर और तीन नंबर क्रोमाटिड के नमा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड देन दुई नंबर और चार नंबर के नमा दैट इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमाटिड बुझी पारलो तो इन हमर क्रोमोसोमल सेगमेंट रो एक्सचेंज बा बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड राइट माने कर ई सेगमेंट काना बा सेपरेट हिजबा दिस सेगमेंट विल सेपरेट ओके so let me separate this ई सेगमेंट काना हेगला सेपरेट है ओके एंड द ऑप्शन ई जगह रे ई पर्सन टा कटि गला राइट ई सेगमेंट टा सेपरेट हे जिबा ओके तो सेपरेट कर देना इतके सपोज इतके हमें सेपरेट कर दे ओके एंड सेम टाइम रे अमर काना हबा आउटे इतर नॉन सिस्टर क्रोमाटिड रो भी काना हेगला सेपरेशन ई क्रोमाटिड रो सेपरेशन जेन से भी नॉन सिस्टर क्रोमाटिड पारे ई पर्सन भी इटा भी पारे और इटा भी पारे गुटे राइट ई सेपरेशन हेगला सो दैट हमर पाके दुईटा सेगमेंट मिलला हमर पाके आसला दुईटा सेगमेंट तापरे काना करबा ई सेगमेंट आसी जिबा इतर निके एंड ई सेगमेंट आसी जिबा इतर निके दुहे दुकर पोजीशन एक्सचेंज कर देबे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट सो दैट हाउ इट विल लुक नाउ या जदि देखमा एटा केनता दिसबा ओके देखा तो हमर इनके आसी गला केनटा इतर सेगमेंटा इनके so that now it will just look and इतर सेगमेंटा आसी गला इनके so that it will just look ओके बुझी पारलो इता के कहउचो में काम मिली कि दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर ओके सो जितले क्रॉसिंग ओवर हेसी सपोज इटा हमर क्रोमाटिड माने अछन यू नो जेतबले इतर क्रॉसिंग ओवर होउची गोटे पॉइंट रे क्रॉसिंग ओवर होउची देखो यू सी हियर गोटे पॉइंट रे क्रॉसिंग ओवर होउची एंड द गोटे पॉइंट रे क्रॉसिंग ओवर होउची जेन पॉइंट रे क्रॉसिंग ओवर हेसी ओके
ये दुईटा जेतेबेले हमर सपोज हमर 3D व्यू जे देखमा ये पॉइंट रे इनो गोटे क्रॉसिंग ओवर होचे जेन पॉइंट रे क्रॉसिंग ओवर हेसी से पॉइंट के कुहा जसे कमरे के दैट इज कॉल्ड योर काइजमाटा जेन पॉइंट रे माने अटैच जेतिबे से पॉइंट रे ही हमर काना हेसी क्रॉसिंग ओवर हेसी ओके सपोज दिस वन दैट इज योर गोटे क्रोमाटिड हला एंड इतर आरो पार्टनर टा इटा हियर अछि केनसे भी पॉइंट रे ही पारे ओके बहुत सारा पॉइंट रे भी पारे गोटे पॉइंट रे बोली के माने नै ना बहुत सारा पॉइंट रे क्रॉसिंग ओवर ही पारे तो ये पॉइंट रे जेन पॉइंट रे क्रॉसिंग ओवर होचे दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज काइजमा okay the point of crossing over between the non-sister chromatid of the homologous chromosome that is called as your chiasmata okay so chiasmata formation hala and from that point they will exchange their genetic material or exchange their chromosomal segment that is known as your crossing over and question as a crossing over can phase that is in the Pachitian phase right तापर देखो नेक्स्ट हमर हला 4 नंबर फेज जाके कहउछन डिप्लोटिन डिप्लोटिन फेज रे हमर एक्चुअली कान हमर देखो हमर जनी homologous chromosome pairing हेतिला that pair of homologous chromosome they start separating from each other pair of homologous chromosome after crossing over start separating from each other निजन निजन इमाने सेपरेट हबाटा स्टार्ट कले आगरु काना हितला पेयरिंग हितला केन फेज रे पेयरिंग हितला जाइगोटिन फेज रे केन पेयरिंग कांतर लगितला क्रॉसिंग ओवर लगी क्रॉसिंग ओवर केनो सरला पाचिटिन स्टेज रे पाचिटिन रे क्रॉसिंग ओवर सरला पर पेयरिंग रे किछि जरूरत नै न सो दैट दे नाउ स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर केन फेज रे दैट इज इन द डिप्लोटिन फेज रे एंड जेहेतु सेपरेट होतबे इनु इमाने एंता थिले क्रॉसिंग ओवर कले राइट तापरे जेतले माने सेपरेट हला टाइम रे जे देखमा से जगह रे माने ई एंता 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 धीरे 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 सेपरेट जेहेतु सेपरेटेड जेतेबेले मोर मानकर सेपरेशन होउची से टाइम रे हमें क्लियरली काचमाटा पॉइंट के विजिबल करि पारबा देखो इनो जेतेबेले पेयरिंग होतला इनो इन द प्रोसेस रे क्रॉसिंग ओवर हेतला राइट बट इमाने ई यार के घिची हबा ई यार के जेतेबेले दुईटा सेपरेट हबाटा स्टार्ट करबे हमर ई जाकर क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट सरला परे नेक्स्ट लास्ट के हमर केन पॉइंट केन जिनिसटा देख पार के पामा हमर धरेन्य क्रॉसिंग ओवर होतला ओके लास्ट के इनो काना हेतल जाउचे ई इतरनो भागतेल जाउचे सेपरेट हेतल so that clearly chiasmata point ta visible है केन फेज रे that is in the diplotin phase इनो क्वेश्चन है देखो chiasmata रो काम ता तो हमर पाचिटिन रे स्टेज रे थिला जे chiasmata पॉइंट रे क्रॉसिंग ओवर है बट chiasmata के केन स्टेज रे हमें विजिबल करि पारमा chiasmata is clearly visible in a diplotin stage clearly visible in diplotin stage इनो क्वेश्चन है बहुत लोग भूल कर दसन जेहेतु क्रॉसिंग ओवर टा हमर हला केनु जेहेतु क्रॉसिंग ओवर टा हला पाचिटिन रे सो दे थॉट दैट chiasmata also may visible in the pachitin stage but actually नहीं से pachitin stage रे हमर chiasmata visible नहीं हुए that chiasmata is clearly visible in this diplotin phase okay एटा diplotin रखा नेक्स्ट असला हमर लास्ट फेज दैट इज योर 5 नंबर फेज दैट इज योर डायकाइनेसिस प्राय पखापखि दैट इज सेम एज दैट ऑफ योर माइटोटिक प्रोफेज सेम एज
माइटोटिक प्रोफेज संगे पाखा पाखी सेम रही ओके इन काना हवा जमर न्यूक्लियस रो मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपियरिंग न्यूक्लियस रो मेम्ब्रेन टा डिसअपियर कर जिबा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एतके बेल तक न्यूक्लियस रो मेम्ब्रेन थिला तली राइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस degenerate or disintegrate right तार संगे संगे हमर जन डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम थिला सेंट्रोसोम जन डुप्लीकेट हेतिला that duplicated centrosome they are aparting from each other and they make the microtubules and that microtubules are nothing but that is a spindle fiber and they are now connecting with the homologous chromosomes okay so here duplicated centrosome they are forming spindle fiber we will discuss this with the diagram forming spindle fiber formation region and that spindle fiber are now connected with the chromosomes now they are connecting with homologous chromosome right so let's see here how it will look amar dikinesis re this is the last stage of the prophase 1 ର last stage इन हमर homologous chromosome माने जन अच्छा ये जेनु हमर यादे साइटोप्लाज्म रे फ्रीली अच्छा okay after crossing over माने करिटा आइजे तुमको जनता सुविधा हवा यू कैन ड्रॉ योर डाई ओके मैं थोड़े कर दो बट रिपीटेडली हमको करवाना नहीं ना you know amar kana la this one that is your one centriole and here this one that is another centriole imane kana karle they are forming the microtubules okay किछि microtubules ई पोल रु से पोल के भी मूव करि जेथिबा ओके तो एटा हलो हमर kana homologous chromosome रो जाई करी हमर centriole टा लागि गला ना ई सॉरी spindle fiber टा लागि गला ना and here your prophase 1 is completed now next we have to go for the next step that is your second phase that is your metaphase 1 एबे असला हमर kana metaphase 1 in metaphase 1 what will happen the spindle fiber of the centrosome they bring the chromosome or homologous chromosome to the equatorial plate okay so here what will happen the spindle fibers of centrosome that brings the chromosome towards the center okay and जहा के हम कहसो काम करी दैट इज नोन एज कंग्रेशन बोली करी कहा जेसी कंग्रेशन केनो दे डिस्कशन करिथना दैट इज इन केस ऑफ योर माइटोसिस पल्ला टाइम रे हम डिस्कशन करिथना राइट तो हमर काना हम देखो सेंटर रे जेना आसिकरी क्रोमोसोम मनकर अलाइनमेंट हवा ताके कहसे काम करी दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट दैट इज नोन एज व्हाट मेटाफेजिक प्लेट राइट so let's discuss here let's see here यदि हमें डायग्राम देखु छु सपोज दिस इज योर सेल हला in the cell there will be here these are the chromosomes this is your chromosome number 1 this is another chromosome number 1 okay then here suppose this one this is the another chromosome this is the second chromosome this is the second chromosome okay so what will happen the spindle fiber that connected with this homologous chromosome okay from this spindle fiber that is connected here some spindle fiber they may also move from this or that may
continuous from one pole to other pole. Okay, so amar ena kana hala, this is chromosome number 1, this is chromosome number 2, chromosome number, right? So during this process, okay, here this area where all these homologous chromosomes are aligned, that is known as what? That is your metaphasic plate. This is your metaphasic plate. Clear? Metaphasic plate रे आसिक क्रोमोसोम माने काहे हेले सजे हेकरे रहले. This is your metaphase 1. नेक्स्ट हमर काना हला मेटाफेज 1 परे हमर जेंटा कि शॉर्टेस्ट फेज बोली कि कंसीडर करसु, जाके कोइसो हमें अनाफेज बोली कि कहसु. तो अनाफेज 1 हमको डिस्कशन करवार अछि. Anaphase 1. Okay, in anaphase 1 what will happen? In anaphase 1 the homologous chromosome they start separating from each other and they are moving towards the opposite pole by the activity of the spindle fiber. Okay, in anaphase 1 what will happen? The homologous chromosome separate. Homologous pair of chromosome, homologous pair of chromosome, they separate and moving towards the opposite pole, moving towards opposite pole, opposite pole, right? So if you see the diagram, it will just look like this. Suppose this is your cell. What will happen in the cell? Here, this is one homologous chromosome. This is chromosome number 1. The total chromosome is moving here. The total chromosome that is moving in this direction and this total chromosome that is moving in this direction. But our mitosis re kana hotala? In mitosis there is separation of the chromatid. But here the total chromosome will get separate. गोटे एक नंबर क्रोमोसोम इस साइड के गला, आरे एक नंबर क्रोमोसोम इस साइड के गला. तो इन नंबर टोटल क्रोमोसोम रो सेपरेशन होचे, राइट? इन नंबर क्रोमाटिड रो सेपरेशन नहीं हबार, इन टोटल क्रोमोसोम that are separating here. Okay, so e pole के गला, this one that is moving towards this pole. तो हमर अनाफेज रे काना हबा, they are separating from each other and they are moving towards the opposite pole. दुईटा हमर एक नंबर टा गुटे यार के गला, एक नंबर टा गुटे यार के गला, दुई नंबर टा गुटे यार के गला, दुई नंबर टा गुटे यार के गला, राइट? तो हमर इक्वेटोरियल प्लेट रु माने काना करले सेपरेट करि गले एंड दुई साइड के मूव करि जाउछ, जहा कि कोइसे काम लिकरी दिस मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, homologous chromosome to the opposite pole, that is known as your disjunction. That is called as what? Disjunction. Okay, what is disjunction? The movement of homologous chromosome, the movement of homologous chromosome towards the opposite pole, towards the opposite pole, that is known as what? That is called as your disjunction bali ki kohu. And due to the disjunction, what happened? The chromosomes they get separate and they are moving towards the opposite pole. So this is all about the anaphase 1, right? Then what will happen in telophase 1? Telophase 1, our next asala amar kana, that is your telophase 1. Telophase 1. This is the last phase of your prophase 1, last phase of your meiosis 1. Meiosis 1 ro karyokinesis ro first phase ala amar kana, that is your telophase 1. In telophase 1, what will happen? Here the homologous chromosome they are now at the different pole, the opposite pole re achan, but in telophase 1 what happen? The chromosome again start decondensation. Chromosome ro kana haba jagare chromosomes that undergoes decondensation. Okay, due to decondensation of the chromosome, again chromosome is converting into what? Chromatin. Again chromosome can के convert है जीवा, chromatin निके convert है, right? फिर thread form के exist करवा. Here
the chromosome will just look like the thread. जेंदा कि हमर प्रोफेज 1 जते बेले स्टार्टिंग होतला the time रे जनता दुस्तला, it is just looking like this. Okay, and again what will happen here around this chromosome amar जन स्पिंडल फाइबर माने फॉर्मेशन हेतला, स्पिंडल फाइबर भी डिसअपियर करि जिबा, स्पिंडल फाइबर जन फॉर्मेशन हेतला that also disappear. Okay, as well as what will happen in this stage, there will be reformation of nuclear membrane, and nucleolus. Nucleolus, our nuclear membrane again, kana karba reappear karba, so that this is your nucleolus suppose, and here there will be formation of nuclear membrane around the chromosomes. So again our nuclear membrane formation hegala. So here our karyokinesis 1 complete hela, that means here we have two daughter nuclei. Region duita nucleus banla, this is called as what? Daughter nuclei. And let's see here, daughter nuclei re ketata chromosome ache. If you see the both these nucleus, दुई nucleus का मैं जितने देखूँ जो here this is one having one here in this nucleus there is presence of गुटे chromosome एक नंबर अच्छे गुटे दुई नंबर अच्छे, माने total chromosome इनो कितने अच्छे दुईटा, इनो total chromosome गुटे एक नंबर टा गुटे दुई नंबर टा, तो total chromosome कितने अच्छे दुईटा, right? but हमार जेन सेल रो इतर formation हला जेन mother cell थिला, तो mother cell रे total chromosome कितने थिला, mother cell रे चारटा chromosome थिला ना, हमार जेन mother cell नहीं थिला, मदर सेल रे केतरा क्रोमोसोम थिला, चारटा क्रोमोसोम थिला. ओके, हियर हमर येलो टा दुटा थिला, व्हाइट टा दुटा थिला, टोटल क्रोमोसोम चारटा थिला, बट इनो हमर काना अछि टोटल क्रोमोसोम कमी करी केते आसे गेला दुई सेल थरे दुईटा क्रोमोसोम. ओके, तो इनो हमर क्रोमोसोम नंबर हाफ हे गेला, 2n थिला हमर मदर सेल रे, बट इनो क्रोमोसोम नंबर हाफ हे गेला, एंड दैट बिकम व्हाट, यदि 2n रो आधा करबा दैट विल बी योर n. Okay, so in our n is equal to हेगला 2, n is equal to हेगला 2, क्रोमोसोम नंबर आधा हेगला, राइट? सेति लगी ई फेज के कोइसे काम रे, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनल फेज बोली करी कोआ जैसे. तापर हमर काना बा देयर विल बी अकरेंस ऑफ योर साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1 रे हमर काना हेसी, साइटोकाइनेसिस 1 रे साइटोप्लाज्म विल बी डिवाइड, हमर जेन दुईटा डॉटर न्यूक्लियस फॉर्मेशन हला समानकर भितरे काना फॉर्मेशन हवा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वॉल, और इफ इट इज योर एनिमल सेल देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ योर मेम्ब्रेन. तो साइटोप्लाज्म रो इज अगर हमर काना हवा डिवीजन. ओके, सो हियर यदि हमर सेल हला, this is your one nucleus, this is another nucleus, and this is having two chromosomes. जेतु हमें ना एग्जांपल नै छु, इना भी दुईटा क्रोमोसोम अछि, राइट? इमानकर भितर हमर काना फॉर्मेशन हबा, वॉल फॉर्मेशन हबा. जदि हमर प्लांट सेल हेतबा सेल प्लेट मेथड रे सेल वॉल फॉर्मेशन करबा, जदि एनिमल सेल हेतबा हमर सेल फोरो मेथड रे वॉल फॉर्मेशन हबा. So this is your result of the meiosis 1. इटा हला meiosis 1 रो रिजल्ट. तापरे हमर काना हबा नेक्स्ट meiosis 2. meiosis 2 टा that is 100% same with that of your mitosis. जेन माने mitosis जानि छ तमन को किछि करबार कहीं न पड़े, mitosis रे जहा जहा से सेम प्रोसेस meiosis 2 रे भी. ओके, इनो क्वेश्चन आसी जम और meiosis 2 टा केन प्रोसेस संगे समान है, केन डिवीजन संगे समान, दैट इज योर mitosis संगे समान है. देखो mitosis भी इक्वेशनल डिवीजन करसे, meiosis 2 रे भी इक्वेशनल डिवीजन है. ओके, तो meiosis 2 के भी हमें डिवाइड करि परमा काना karyokinesis 2, karyokinesis 2 and your cytokinesis 2. cytokinesis 2, karyokinesis 2 और cytokinesis 2 दुईटा फेज रे में डिवाइड करबा. karyokinesis 2 के डिवाइड करमा केन केन फेज रे, प्रोफेज 2, then metaphase 2,
metaphase 2, then anaphase 2, and your last one, that is your telophase 2. ओके देखो हमर इनो मुझे तुमको जह डिटेल्स नहीं जीवा जेतु माइटोसिस पढ़ी सारी छो पूरा माइटोसिस संगे समान है तो प्रोफेज 1 रे हमर प्रोफेज 2 रे काना हेसी देखो सेम प्रोफेज रे हमर जनता हेसी हमर माइटोटिक प्रोफेज रे जहा हेसी दैट इज सेम एज द माइटोटिक प्रोफेज सेम एज माइटोटिक प्रोफेज ओके सो माइटोसिस रो प्रोफेज के तुम्हें देखि दबो देन दैट विल बी क्लियर फॉर यू जस्ट हमें ना देखि दो प्रोफेज रो एट लास्ट पोजीशन रे हमर काना हे जेतिस न प्रोफेज रो लास्ट आड़ के हमर क्रोमोसोम रो फॉर्मेशन प्राय हे जेतिस न ओके देखो हमर जन दुईटा सेल फॉर्मेशन है दुई सेल रे हमें डिस्कशन करमा देखो दुईटा सेल दुईटा न्यूक्लियस दुई साइड रे छै ना तुम दुही सेल के नेकरी देखो छै जे गोटे सेल हला एटा गोटे सेल इन हमर इ सेल रे केतेटा क्रोमोसोम अछि दुईटा क्रोमोसोम इ सेल रे हमर केतेटा क्रोमोसोम अछि दुईटा क्रोमोसोम ओके देन इन हमर स्पिंडल फाइबर फिर फॉर्मेशन हबा सेंट्रियोल रो ओके दुईटा अलग अलग सेल दुहित रे हमर फिर नोआ सेंट्रोसोम फॉर्मेशन हबा केनो इंटरकाइनेसिस काहे कहछो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 भीतर जन गैप रहला ताके कहछो हमें काम लिखरी इंटरकाइनेसिस रे फिर सेंट्रोल रो डुप्लीकेशन हेतिबा राइट तो इनो हमर स्पिंडल फाइबर मन आसी कनेक्ट हे छ न्यूक्लियस रो मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाय छै न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाय छै नाउ दे आर इन द साइटोप्लाज्म स्पिंडल फाइबर मन काना करबे क्रोमोसोम मन को आनी करी सेंटर अलाइन करबे जंटे के हमर मेटाफेज 2 रे देखबार के मिलबा ओके सब हमर माइटोसिस रो प्रोफेज संगे समान मेटाफेज 2 भी माइटोसिस रो मेटाफेज संगे समान है तेने जे हमर सेल हला इन हमर क्रोमोसोम माने काना करबे दे विल अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेन बाय द एक्टिविटी ऑफ द स्पिंडल फाइबर माने काना करले हमर क्रोमोसोम मान को अनेकरी इक्वेटोरियल प्लेन रे थुई नेले ओके here this one that is your centrosome this one is your centrosome okay next part will happen is अगर हमर काना हम देखो इज एन क्रोमाटिड अच्छे सेपरेशन हो गोटे क्रोमाटिड यार के जीवा आ गोटे क्रोमाटिड कल के आबा इ क्रोमाटिड यार के जीवा इ क्रोमाटिड यार के आबा जस्ट लाइक दैट इनो बी क्रोमाटिड यार के जीवा इ क्रोमाटिड यार के आसबा इ क्रोमाटिड यार के so that if you see the cell इदे मैं सेल के देखु छु भितरे काना होउची हमर नेक्स्ट हमर काना हबा ओके एनीवे नेक्स्ट स्लाइड रे कर मारे बेटर हबा हमर नेक्स्ट हबा काना दैट इज योर anaphase 2 anaphase 2 and anaphase 2 रे here this one is moving towards this white one is moving towards this pole this one is moving towards this pole इन हमर कहार सेपरेशन है क्रोमाटिड रो सेपरेशन है बट हमर मियोसिस 1 रे कहार सेपरेशन होतला मियोसिस 1 रे हमर सेपरेशन होतला होमोलोगस क्रोमोसोम रो सेपरेशन होतला बट इन हमर सेपरेशन है कहार क्रोमाटिड रो सेपरेशन है हमर जन क्रोमोसोम टा डायर कंडीशन रे थिला एबे क्रोमोसोम टा मोनार कंडीशन के आसु ओके हमर स्पिंडल फाइबर टा ऑपोजिट पोल के क्रोमाटिड्स मन को काना कला घिचला राइट so that it is moving towards this pole this is moving towards this pole right so this is one that is the anaphase 2 जेंदा कि हमर माइटोसिस रो anaphase संगे पूरा पूरी सेम है तापरे हमर असला लास्ट वन दैट इज योर टेलोफेज 2 टेलोफेज 2 रे हमर काना हवा टेलोफेज 2 रे हियर हमर फिर क्रोमोसोम टा क्रोमाटिन फॉर्म के रिटर्न बैक करवा दिस वन चलतिला ओके फिर क्रोमाटिन फॉर्म के रिटर्न करवा बट इनो हमर
डीएनए टा फिर क्रोमाटिन फॉर्म के रिटर्न बैक कला, क्रोमोसोम टा धीरे धीरे फिर थ्रेड फॉर्म के रिटर्न बैक करिछि, राइट। बट हमर क्रोमोसोम याद है जे देखमा दैट इज हैविंग सिंगल क्रोमाटिड, बट आगर हमर क्रोमाटिड माने डबल, क्रोमोसोम माने डबल क्रोमाटिड कंडीशन रे थिले, डबल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम थिला, बट इन सिंगल स्ट्रक्चर क्रोमोसोम अछि। ओके, तापर फिर न्यूक्लियर लॉस अपीयर करबा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर करबा, तो इनो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हला। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट फेज होचे हमर काना दैट इज साइटोकाइनेसिस 2। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस 2 रे साइटोप्लाज्म रो डिवीजन हबा। जदि हमर प्लांट सेल है तो इनो सेल प्लेट फॉर्मेशन हबा, एनिमल सेल है सेल फोरो मेथड फॉर्मेशन करबा, सेल फोरो मेथड में माइटोसिस रो साइटोकाइनेसिस रे डिस्ट्रीब्यूशन करथिला। ओके, तो लास्ट के हमर केतेटा सेल बनला, चारटा। ओके, ई जेन चारटा सेल बनला सबु सेल देखो इनो क्रोमोसोम केतेटा अछि, n = 2, इनो भी n = 2, n = 2, n = 2। क्या हला जे n वाला, बिकॉज़ एक नंबर टा है ना सबु ना देखो, एक नंबर टा गुटे, दुई नंबर टा गुटे, एक नंबर टा गुटे, दुई नंबर टा गुटे, एक नंबर टा गुटे, दुई नंबर टा गुटे, एक नंबर टा गुटे, दुई नंबर टा गुटे। ओके, तो इनो हमर एक नंबर गुटे क्रोमोसोम अछि, दुई नंबर गुटे क्रोमोसोम अछि, दुईटा के मिसे के गुटे काना कहसो n, एंड n रो वैल्यू हमर केते हला 2। बट हमर मदर सेल रे n रो वैल्यू, मदर सेल रे हमें काना थिला, मदर सेल टा हमर थिला काना दैट इज डिप्लॉइड सेल थिला, जेना कि 2n = काना थिला 4 थिला। हमर मदर सेल जतेले देखुछु, मदर सेल पाखे टोटल क्रोमोसोम केते थिला, हमर जन मदर सेल थिला 1 2 3 4, 2n = थिला 4। बट हमर डॉटर सेल एंदा सेल पहला, ओके, जेना कि n = काना हे गला, n = आसीगला 2 आसीगला। क्रोमोसोम नंबर लास्ट के जे देखमा, क्रोमोसोम नंबर जन हमर रिजल्ट पाना, रिजल्ट ऑफ डॉटर सेल, तो ई जन चारटा पहला these are called as what, these are the daughter cell। केतेटा डॉटर सेल पहला, चारटा डॉटर सेल पहला at the end of the meiosis 2, meiosis 2 सरला, then अमर सरला meiosis total complete हला। okay, I think this all these are clearly understand by all of you। I think समझते भल से बुझी जाइथिबो, किनसे न भी डाउट होबा, you can write in the comment section, I will try to rectify this। okay, and if any doubt you can write in this comment section, and for more updates you can join our WhatsApp or Telegram channel, and recently we have generated our WhatsApp channel, so that you can join our WhatsApp channel, and the link will be provided very soon। okay, please like, share and subscribe our channel, thank you।